if the internode elongations occurring between the calyx and corolla, when between the calyx and corolla internode elongation occur, when internode elongation occur between the calyx and corolla, this condition is called anthophore. क्या बोलेंगे सेम से? Anthophore. This is called anthophore. Anthophore as in cases of silines, dianthus. तो silene है, silene, dianthus. There you will find anthophore. Getting on? Or when internode elongation between the calyx and corolla occur, when elongations of internode between the calyx and corolla जो internodes हैं, if elongation occur there, this condition is called androphore. What is this? This is androphore as in case of passiflora. This question came already. This is example passiflora. There you will find कि internode elongation occur between the calyx and between the corolla and androecium. This is androphore as in cases of passiflora. ठीक है? If internode elongation occur between the androecium and gynoecium, if internode elongation occur between the androecium and gynoecium, this is called this is called gynophore. क्या बोलेंगे सेम? Gynophore. If internode elongation occur between the androecium and gynoecium, this is called gynophore as in cases of cuparis. Cuparis. In case of cuparis, you can see this condition. Okay? ठीक है ना भाई? If internode elongation occur between the thalamus and carpel, if internode elongation occur between the thalamus and carpel, this is called carpophore. क्या बोलेंगे सेम? Carpophore. Carpophore. Up to here, okay? एक carpophore मिल जाएगा. Carpophore condition you can see in case of coriandrum. Coriandrum में मिल जाएगा आपका funiculum. तो coriandrum जो आपके coriandrum धनिया, तो coriandrum you can see this. Funiculum में you can see this. A flower in which androphore and gynophore both conditions are there. A flower in which androphore and gynophore both conditions are there. Such flowers are called gynandrophore. इस condition को क्या बोलेंगे हम? This condition is regarded as gynandrophore. Gynandrophore. As in case of gynandropsis, cilium. तो gynandropsis, cilium, you can see. Passiflora already came. Okay. When internode elongation occur between calyx and corolla, anthophore. Between corolla and anther, आपका androphore. Between androecium and gynoecium, gynophore. Between thalamus and carpel, carpophore. Between a flower having both condition, androphore and gynophore both, gynandrophore. Done or not? Up to here clear? Getting on energy? So all these conditions are there. You can find. So what I told you is some terminology that you have to remember. ये इसको ध्यान रखें. चलिए ठीक. So अगली condition देखें. Now we are talking about types of flower on the basis of insertion of floral leaves. Types of flower on the basis of insertion of floral leaves. Floral leaves means to say from where these leaves are arising. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. From which part they are arising? As I told you, all these parts arising from the thalamus. Means to say they seems to appear from which part? Above the thalamus, below the thalamus. Like that condition, above the ovary, below the ovary. निकलना सबको कहाँ से है? All these parts arise. They all arise from the thalamus only. But this seems to appear from there. On the basis of that we are discussing. So types of flower on the basis of floral parts arising. Getting on now? Now listen. इसमें हमें बात करनी है आपकी किसकी? इसे बात करेंगे हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर की. ओके? एक कंडीशन पढ़ेंगे सुपीरियर फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी एंड हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी. इनका डिस्कशन करना है. जस्ट लेट चेक. देखेंगे. What I told, हमने कहा बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर. सबसे पहले आप देखिएगा डायग्राम में हम बात कर रहे हैं एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, इनकी बात कर रहे हैं. ओके, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं एपिगाइनस. ओके, एपिगाइनस फ्लावर. ठीक है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस समझेंगे. मैं एक यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा. मैंने कहा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
इपिगाइनस मतलब गाइनोसियम के ऊपर से, ठीक। व्हेन फ्लोरल पार्ट्स देखें, व्हेन फ्लोरल पार्ट्स सीम्स टू अपीयर, निकलना सब यहीं से है। व्हेन फ्लोरल पार्ट्स सीम्स टू अपीयर, ये देखो ये थैलेमस वाला रीजन है और थैलेमस के ऊपर वाले रीजन से मैं निकाल रहा हूं। ये देखो दीज आर, ये कौन है आपके, दीज आर कैलक्स। नाउ corolla, but here calyx, corolla, androcium, getting or not? Hey, androcium or gynoecium. All the parts you can see from where these are arising. These are seems to appear they are coming above ovary. From upper part of ovary, epigynous flower. That's why this ovary, you are unable to see this ovary. It छुप गई है. That's why ovary is regarded as inferior ovary. Epigynous flower with inferior ovary. Clear or not? Epigynous flower with inferior ovary. Epigynous flower with inferior ovary. इसको ध्यान रखेंगे तो epigynous condition you can find in case of guava, apple, cucumber. Epigynous, ठीक है. तो guava, apple, cucumber, ray florate of sunflower. Getting on out? Epigynous. देखिए आपके कोर्स में whatever the families are there, they all are superior. Only हमने कहा रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये आपको दिख रहा है कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी एंड एस्टरेसी में भी रे फ्लोरेट है. एस्टरेसी के रे फ्लोरेट. अदरवाइज ऑल फैमिलीज व्हाटएवर इन योर कोर्स दे ऑल आर सुपीरियर ओवरी. देन चलिए नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं किसकी, आपके हाइपोगाइनस की. हाइपोगाइनस देखें, हाइपोगाइनस फ्लावर व्हेन स्टिग्मा, style and ovary. Okay, stigma is hypogynous when all floral parts seems to arise from the base of the ovary. Hypogynous, hyper नीचे, seems to appear hypo, बड़ा calyx, corolla, androcium, getting on out? When all floral parts seems to arise from the base of the ovary, hypogynous flower, and in this condition you can see this ovary clearly visible. This is superior ovary. So hypogynous flower with superior ovary, most of your families. As I told, cucurbitaceae inferior है, रे फ्लोरेट ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली के सनफ्लावर के दे आर inferior. बाकी सारी आपकी कोर्स की फैमिली सुपीरियर है. गेटिंग ऑन और चाहे मस्टर्ड यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली हो, चाइना रोज यानी कि मालवेसी फैमिली हो, ब्रिंजल वगैरह यानी सालनेसी फैमिली हो, सारी सुपीरियर है. डन और नॉट. नेक्स्ट केस इज देयर पेरिगाइनस फ्लावर. पेरिगाइनस, इन केसेस ऑफ पेरिगाइनस समझे, पेरिगाइनस फ्लावर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी. देखेंगे बेटा आपके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Then when all floral parts this seems to appear they coming out from middle part of the ovary.
middle part of the ovary. You can see here half ovary covered, here half ovary covered. तो आधी ओवरी जो है हाफ ओवरी कवर्ड, ठीक है, हिडन है, और हाफ ओवरी सुपीरियर की तरह है. दिस इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर ओवरी एंड फ्लावर रिगार्डेड एज पेरीगाइनस फ्लावर. पेरीगाइनस फ्लावर पीच प्लम एंड रोज, पीच प्लम एंड रोज ध्यान रखेंगे. तो पीच प्लम एंड रोज आपके हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर. One questions nearly every year they are asking, find out 10-12 एग्जांपल देगा तो पूछेगा कि how many are having superior ovary, inferior ovary और half superior half inferior, इस तरह से. So आपको पीच प्लम एंड रोज पेरीगाइनस फ्लावर तीन ही याद रखनी है. इन केस ऑफ इंफीरियर में आपको याद रखना गुआवा एप्पल. तो गुआवा एप्पल जो आउटसाइड है, गुआवा एप्पल कुकुरबिटेसी फैमिली और एस्टेरेसी का रेड फ्लोरेट. गेटिंग ऑनर्जी इतनी चीज याद रखनी है. डन क्लियर है, इसको ध्यान रखिए. ओके, नाउ लिसन, दूसरी बात करते हैं हम लोग. सो नाउ गेटिंग ऑनर्जी. सो व्हाट आई टोल्ड बेटा, एज इन केस ऑफ एपिगाइनस कंडीशंस इजीली यू कैन सी है. ठीक, एपिगाइनस देखो ओवरी कंप्लीटली हिडन है, छुपी ओवरी दिख रही है. एपिगाइनस फ्लावर विद इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस फ्लावर विद इंफीरियर ओवरी क्लियरली यू कैन सी. In this condition you can see hypogynous flower. Hypogynous flower means superior ovary, all flower parts base से निकल रहे हैं और ovary जो है clearly visible है. Hypogynous superior ovary. देखिए जो इसको floral formula में we are representing like this. Gynoecium नीचे अंडरलाइन किया, ठीक है. Gynoecium में अगर आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिए इसे बोलते हैं superior ovary. Gynoecium में नीचे अंडरलाइन कर दिया superior ovary. एक गायनोसियम के ऊपर अंडरलाइन कर दिया inferior ovary. If we are making in middle, this is half superior, half inferior ovary. Getting or not clear? So here you can see epigynous conditions. Okay, hypogynous conditions already you have seen. The epigynous, hypogynous conditions और एक कंडीशन ने किसकी बात की, पेरीगाइनस की, कि पीच प्लम एंड रोज. Done or not? Diagram by clearly you can see everything. Okay, इसको में ध्यान रखना है. ठीक है. Now we are talking about one another term is there flower में, that is called bract. किसकी बात हो रही है, bract की. देखेंगे देखिए bract क्या है. अगर मैं ब्रैक्ट की बात करूं तो आर रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल ऑफ फ्लावर. आर रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ फ्लावर. दिस इज ब्रैक्ट. कैसे मतलब, सपोज यहां पर हमने एक फ्लावर लगा दिए, देखो कितना सुंदर सा फ्लावर. ओके, तो आ लीफ, हाईली रिड्यूस्ड लीफ, leaf like structure present at the base of pedicel of flower. Pedicel के base पर they are bract. Getting enough? डायग्राम में आपको जो दिख रहे हैं they are bract. Clear or not जी? Bract जो होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. In cases of bract अगर हम ले रहे हैं, ठीक, what I told बेटा कि bract can be of following types. Bract can be in modifications है. Bract can modify into फॉलोइंग. क्या, जैसे एक टर्म दिया है आपके में टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट जस्ट लाइक पेटलॉइड ब्रैक्ट. पेटलॉइड ब्रैक्ट मींस टू से ब्रैक्ट जस्ट लाइक अ पेटल्स. इन केस ऑफ बोगनविलिया, इन बोगनविलिया पॉइंसेट्रिया, पेटलॉइड ब्रैक्ट्स आर देयर. जो क्या बढ़िया एकदम पिंकिश कलर के दिख रहे हैं बोगनविलिया में. तो जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है इन बोगनविलिया एक्चुअली दे आर ब्रैक्ट. जो रियल फ्लावर दैट इज व्हाइट वन ओनली. तो द रियल फ्लावर व्हाइट है और जो कलर स्ट्रक्चर है दे आर ब्रैक्ट. गेटिंग नाउ, तो द कलर यानी पेटलॉइड ब्रैक्ट ऑफ बोगनविलिया यू कैन सी.